Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें इंटीग्रल्स विथ मेनी वैल्यूड फंक्शंस ए विषय रे पढिबा सो फॉर दिस पर्पस जदि आमे गोटे टर्म नौचु एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस वन जोटा हूँ मेनी वैल्यूड फंक्शन केमती सपोज अल्फा इज नॉट एन इंटीजर ताले द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 to infinity of x to the power alpha minus 1 along with multiplication with a function that is g of x. This can be evaluated by contour integration. सो आम जमी लास्ट क्लास करला से भाया गोटे ये देख पिक्चर रे आउटर सर्किल रोचे सी कैपिटल आर ओके जार लार्ज रेडियस रोचे विथ मोड जेड इक्वल टू कैपिटल आर एंड सेंटर एट ओरिजिन एंड इट इज कटिंग along the real axis from 0 to infinity by the lines AB and CD, right? Both 0 to infinity रोचे आ गोटे रोचे स्मॉल सर्किल यही भितर which is c small r having radius mod z equal to small r okay enclosing the branch point that is your singular point z equal to 0. Now let us say that the function gx be a rational function of x having no poles on the real axis. Then we can write z to the power alpha minus 1 gz as some other function of z that is fz, and suppose that z fz tends to 0 uniformly दुईटा कंडीशन रे जेतेबेले z अप्रोच करूची माने mod z अप्रोच करूची इन्फिनिटी आड़ को also mod z जेतेबेले 0 आड़ को अप्रोच करूची ए कंडीशन सैटिस्फाई जदी करिला देन वी हैव द थ्योरम that is the integration जोटा ऊपर हम देखुतला 0 to infinity x to the power alpha minus 1 gx dx should be equal to 2 pi I summation over the residue divided by 1 minus e to the power माने exponential to the power 2 pi I alpha ओके यार प्रूफ बहुत इजी देखो एथिपाई आमे ऑब्वियसली ऊपर जो फिगर देखिलो कोचिस रेसिड्यू थ्योरम आमे अप्लाई करिबा होल कंटूर रे ओके सो यार वैल्यू आमे पाउछु कोचिस रेसिड्यू थ्योरम रे 2 पाई आई समेशन आर एई कंटूर को आमे चारि भाग रे भाग करि परिबा चारिटा सेगमेंट गोटे आउटर सर्किल इनर सर्किल गोटे लाइन एलिमेंट बा लाइन सेगमेंट आ गोटे लाइन सेगमेंट ओके गोटे ए बी गोटे सी डी लाइन सेगमेंट. नाउ फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द आउटर सर्किल सी कैपिटल आर we have z equal to r e to the power I theta accordingly dz बाहरी गला अगेन जेमती हमें प्रीवियस केस रे देखुतला याकू जदी तमे बाहर करिवो आउटर सर्किल रे यार वैल्यूटा मैग्नीट्यूड जदी बाहर करिवो it will be equal to 0 as mod your z that is your capital R the radius of the outer circle approach towards infinity. Similarly second जो inner circle रे भी as the value of small r approaches towards 0 ताले भी तार इंटीग्रेशन वैल्यूटा 0 देखेबो ताले ए दुई वैल्यू को बे जदी हमें ऊपर इक्वेशन रे पकेबा along with the limits as capital R tends to infinity small r tends to 0 ताले हमरो एटा आसी वाला रिजल्ट एठी गोटे जिंस नोट करो एठी देखो इन्फिनिटी टू 0 अछि माइनस इन्फिनिटी नाही ओके माइनस इन्फिनिटी सेही केस रे आस्तला जोटा हमें देखुतला जॉर्डन स्लेमा ए सब रे जो थे कि लाइन सेगमेंटा ये भाया रही अपर सर्किल थिला मझे ओरिजिन ये पटे इन्फिनिटी आउ ये पटे माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव आड़ को थिला एठी किंतु नेगेटिव आड़ को किछि नै तेणु इन्फिनिटी टू 0 गोटे हैला व्हिच इज फॉर ए बी आ गोटे 0 टू इन्फिनिटी हैला अलोंग द सी डी ओके सो इट इज इंपोर्टेंट टू नोट हियर दैट x to the power alpha minus 1 at the points on the upper edge that is CD. Similarly at the lower edge AB of the cut
are not the same, समान value आसीबो नाही काहेकि because polar coordinate रे हमें तो देखिला z equal to r e to the power I theta. Now we have z to the power alpha minus 1, accordingly यार value एतिकी आसिला. Now the values of your upper edge जो CD अच्छी of the chord belong to mod z equal to x but theta equal to 0. और lower edge AB रे यार value एला belong to mod z equal to x but now theta equal to 2 pi. Accordingly z to the power alpha minus 1 ର ଦୁଇଟା value पाइला. गोटे upper edge रे with theta equal to 0 हमें पाउछु x to the power alpha minus 1 और lower edge AB रे with theta equal to 2 pi हमें पाउछु x to the power alpha minus 1 into e to the power 2 pi I alpha minus 1. Now here you note that a जो term e to the power 2 pi I alpha minus 1 यार value हिजबो e to the power simply 2 pi I alpha केमती हला because देखो याकू जदि हमें एक्सपांड करछु ए टर्म को यार वैल्यू केते आसीबो e to the power 2 pi I alpha एटा फर्स्ट टर्म into e to the power minus 2 pi I. Okay, ए टर्म को एबे देखो this value is nothing but cos of 2 pi minus I sin 2 pi. Okay, यार वैल्यू sin 2 pi रो वैल्यू 0, cos 2 pi रो वैल्यू 1. That means multiplication जो होईची a quantity its value will be equal to 1 plus 0 that is equal to 1. Okay, that is why we are getting e to the power 2 pi I alpha. Okay, अच्छा ताले बे याकू हमें यूज करिबा इक्वेशन 6 रे. ओके, अकॉर्डिंगली इक्वेशन 6 रे हमें यूज करला. तापरे एठी देखो ए लिमिट जो अछि इनफिनिटी टू 0 याकू उल्टेबा जदि उल्टे देला ताले माइनस गोटे हमें इंक्लूड करियो पड़िबो. सो सपोज माइनस गोटे मल्टीप्लाई हमें करला भितरे आ बाहरे एई माइनस जो बाहरे मल्टीप्लाई करिबा एटा लिमिट को उल्टे देबो. ओके, सो दिस लिमिट विल बी अलोंग विथ माइनस विल बी नाउ चेंज टू 0 टू इनफिनिटी भितरे रहला गोटे माइनस जोटा कि आछि एठी. सो अबे हमें इंटीग्रेशन रो दुई इंटीग्रेशन रो समान लिमिट पाई गला एतिकी आसी गला हमरो वैल्यू. नाउ हमको एटा ही प्रूव करिवार थिला यार वैल्यू एई जो ब्रैकेट क्वांटिटी को हमें आर पट को नै गला वी आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट. Now here note that while calculating the residue at the poles that is z to the power alpha minus 1 must be given its correct value. Correct value that is here I think এটা কটি যাইছে টিকে I think এটা হবো x to the power alpha minus 1 into e to the power I theta alpha minus 1. Okay, so jabio let us now solve some of the problems. But before that एठी कोई रखुची एटा जो कहली x to the power alpha हेबोनी this is actually r to the power alpha minus 1. अच्छा, now coming to the exercise number 64 एठी प्रूव करिबा को कहूची 0 to infinity x to the power alpha minus 1 by 1 plus x dx should be equal to pi by sin alpha pi if condition एठी दे देला 0 less than alpha less than 1. Okay, so एठी फंक्शन हमरो ऑलरेडी ए फॉर्मेट रे दे दीची कंडीशन ता सहित दे दीची 0 less than alpha less than 1. ताले z f z यार वैल्यू हम पाई गला एतिकी. एबे देखिबा याकू चेक करिबा. So it is approaching towards 0 as mod z approaches towards infinity. Similarly also z f z रो वैल्यू 0 आड को जीवो as mod z tends towards 0. Hence we are getting the satisfied conditions as given by equation 1. Therefore equation 4 और 5 जोटा हमें देखुतला सेटा तार एग्रीमेंट रे आसुची. सो एबे इंटीग्रेशन ए फॉर्मेट रे हमरो अछि याको हमें यूटिलाइज करिबा ए फार्मूला को. सो इट इज समेशन r कहले हमें बुझिबा सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ दिस टर्म एट ऑल ऑफ इट्स पोल्स. पोल बाहर करिबा पई हेले हमें ऑब्वियसली जानिछु डिनोमिनेटर को इक्वेट करू 0 सहित. एठी पोल होची -1. इट इज ए सिंपल पोल. रेसिड्यू अकॉर्डिंगली बाहर करि देला हमें इजीली एरो तो बाहर करि जानिछो. ताले एबे रेसिड्यू हमरो गोटे आसी गला that is minus e to the power I alpha pi याको एबे एठी पुट कर देला. तापरे माइनस टा एठी बाहर अछि आउ 1 minus this much. फाइनल रिजल्ट आसी गला pi by sin alpha pi. Okay, now moving on to the next problem. एठी बाहर करिया को कहूची देखो टिके भी लंबा इंटीग्रल अछि 0 to infinity of this much. Okay,
should be equal to pi by sin p pi into sin p lambda by sin lambda. Okay, condition दे देला ठीक है, -1 less than p less than 1 ଆଉ minus pi less than lambda less than pi. Okay, so function ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି. Okay, now consider the integral this much where c is representing our contour जोटा ऊपर हमें देखुथिला. अच्छा, now large circle जार radius हेगला mod z equal to capital R आ उटे रहिबो small circle जार ये radius हला mod z equal to small r आ cross cut रहिबो दुईटा. ओके, ताले पोल जदि देखिबा एठी पई हमें देखो एठी न्यूमरेटर तो अछि हमर z टू द पावर p, डिनोमिनेटर को इक्वेट करबा 0 सहित क्वाड्रेटिक इक्वेशन अछि, सॉल्व करबा याको अकॉर्डिंगली हमें एतिकी पाइला दुईटा वैल्यू पाउछु. गोटे हला z इक्वल टू माइनस e टू द पावर i अल्फा आ गोटे हला z इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस i अल्फा. ओके, सो याकू हमें ए हिसाब रे लिखिला जो माइनस सिंबल टाको हटेबा पई e टू द पावर i पाई प्लस लैम्बडा. ओके, आउ एटा को लिखिला e टू द पावर i पाई माइनस लैम्बडा. ओके, नाउ द आर्गुमेंट्स ऑफ द पॉइंट्स बीइंग दैट इज योर पाई प्लस लैम्बडा आउ पाई माइनस लैम्बडा, सो दैट एबे ए जो हमको रेंज टा देछि हला या भितरु जो आर्गुमेंट हमें देखिला जे द आर्गुमेंट्स लाई बिटवीन 0 and 2 pi. So the poles within the contour are z equal to minus e to the power I lambda and z equal to minus e to the power I lambda. Okay, so residue एठी दुईटा जाको पोल रे बाहर करबा को हमको पड़िबो बिकॉज ए जो हमें वैल्यूटा पाइला एटा ए रेंज भितर दुईटा जाको रहउची. ओके, एठी आई थिंक टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि, एठी शुड बी माइनस माइनसटा छाड़ी देछि. से जा भी हो ए दुईटा जाको पोल रे हमें एबे रेसिड्यू बाहर करबा रेस्पेक्टिवली. ओके, एटा गोटे बाहरला आ गोटे पोल रे एटिकी हमर रेसिड्यू बाहरला. अच्छा, एबे 25 रेसिड्यू थ्योरम हमें अप्लाई करबा, चारिटा सेगमेंट रे भाग कर देबा. ओके, सो एटा हला आउटर सर्किल, एटा हला इनर सर्किल, देन हमर जो लाइन सेगमेंट एटा रहउची. Right, this should be equal to 2 pi I summation over r. Outer circle as usual यार magnitude finally approach करिबो 0 आड़ को as mod r tends to infinity. Okay, provided 1 plus p is greater than 0, that is p is greater than minus 1. Okay, similarly तमरो जो magnitude एटा outer circle रे this is again approaching towards 0. एटा sorry outer circle तो ना एटा inner circle. Okay, again a printing mistake. This is approaching towards 0 as the radius of the inner circle small r is approaching towards 0 if 1 minus p is greater than 0, that is p less than 1 जोटा ऊपर हमरो condition देथिला. Okay, ताले hence there exists a condition ए जो ऊपर हमें दुईटा कंडीशन पाउछु आउटर और इनर सर्किल रो जो हमें इंटीग्रेशन को 0 को अप्रोच करला बेल को जे p रो वैल्यू -1 रु 1 भितर रहउची. ओके, सो एबे r को हमें इन्फिनिटी आड़ को अप्रोच करेबा, स्मॉल r को 0 आड़ को, ताले अकॉर्डिंगली एटा आसीगला हमरो इंटीग्रेशन रो वैल्यू गुडा. ओके, आ एटा आसीची 2 pi I समेशन ओवर द रेसिड्यू. ओके, अच्छा एठी एबे देखो हमें fx जोटा नहीं थिला तार वैल्यू को पुट करला. ओके, यार वैल्यू को पुट करला, कॉमन जोटा अछि या को बाहर को आनी आसिला हमको एई जो वैल्यूटा पचार थिला क्वेश्चन. ओके, सो ए क्वांटिटी को आर पट को नहीं जबा हमें हला आर पट को नहीं गले एबे e टू द पावर 2 pi I को 1 भी पुट कर देला एंड फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट जोटा ए क्वेश्चन रे पचार थिला. द RHS इज pi बाय sin p lambda sin p pi बाय sin lambda. ओके, बट हाउएवर आई थिंक एटी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक रहउची. न्यूमरेटर रे एटा pi हेबोनी, दिस शुड बी lambda. डिनोमिनेटर रे एटा lambda हेबोनी, दिस शुड बी pi. ओके, बिकॉज ए जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी e टू द पावर p pi I माइनस e टू द पावर माइनस p pi I यार वैल्यू हबो 2i sin of p pi. राइट, सो 2 आउ 2 एठी कटिला, i आउ i भी एठी कटिगला, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस टर्म. ओके, अच्छा, थैंक यू.